Okay, so let's find out how we can derive an expression of Fourier transform if signal is periodic. So we can start developing the relationship based on this idea. Let's consider that there is a Fourier transform and it's equal to 2 pi into delta omega minus omega. So if you plot this given Fourier transform, so this Fourier transform, when you represent it graphically, it will be like this. At a frequency omega naught, there is an impulse with an area equal to 2 pi. This is 2 pi delta omega minus. And now we are interested in finding out what type of time domain signal can have this type of Fourier transform. So now we need to find out what is the corresponding time domain signal for this type of Fourier transform. So we can make use of inverse Fourier transform relationship. That can help us to find out the required x of t. So let me substitute given Fourier transform is 2 pi delta omega minus omega naught e plus j omega t d omega minus infinity to plus infinity. So this 2 pi will cancel out and we will be left only with this. So what is going to be the answer to this integral? इससे क्या आंसर आएगा आपके साथ? You only have this thing. इस इंटीग्रेशन से क्या आंसर आएगा? सर e की पावर j omega naught t. E to power j omega naught t. Yes, T. correct. So we have found the signal for which Fourier transform consists of impulse. Now the question is, ये जो signal हमारे पास आया है, what type of signal is this? E to power j omega naught t के बारे में हमें क्या पता है? What type of signal is this? सर जी पीरियाडिक सिग्नल है. Yes, that is the answer. Periodic signal. So if you remember, जो पिछले सेशन में मैंने स्टेटमेंट दी थी कि जितने भी पीरियोडिक सिग्नल्स होंगे उनका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म देखेंगे इट विल कंसिस्ट ऑफ इंपल्सेस. तो हमने भी एक सिंपल सिग्नल, सबसे आप कह सकते हैं सिंपल एक सिग्नल देख लिया कि ई जो ओमेगा नॉट टी जो कि पीरियोडिक सिग्नल है विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नॉट और टाइम पीरियड टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम देखें तो यू कैन क्लियरली सी कि इट कंसिस्ट ऑफ इंपल्स. सो ये चीज तो हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर ली. ठीक है, अब अगर हम जनरलाइज एक्सप्रेशन देखें कि ये तो हमारे पास एक स्पेसिफिक पीरियोडिक सिग्नल, वन ऑफ द टाइप ऑफ पीरियोडिक सिग्नल, लेकिन अगर हम जनरलाइज करें कि अगर हमारे पास एनी गिवन पीरियोडिक सिग्नल, एनी गिवन पीरियोडिक सिग्नल, लेट्स से x ऑफ t, तो अगर ये पीरियोडिक सिग्नल है सो वी नो कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोरियर सीरीज से. और वो फोरियर सीरीज किस तरह है?
summation from minus infinity to plus infinity ak is to power j k omega naught। तो ये अगर हमारे पास गिवन पीरियोडिक सिग्नल है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम फाइंड करना चाहें कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो बेस्ड ऑन दिस आइडिया, ये अगर सिंपली ई जे ओमेगा नॉट टी है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है? 2 पाई एंड देन दिस डेल्टा फंक्शन। इस केस में अगर हम देखें, जो हमारे पास सिग्नल है, इट इज ई जे के ओमेगा नॉट टी। सो के ओमेगा नॉट टी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है और ये इसका कोफिशिएंट है या वेट है। तो अगर मैं ये जनरलाइज करूं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। एक तो 2 पाई का फैक्टर आ गया, साथ में ये फैक्टर होगा, और हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा। तो नाउ हमारे पास एक जनरलाइज रिजल्ट आ गया, जो हम किसी भी पीरियोडिक सिग्नल पे अप्लाई कर सकते हैं। एनी गिवन पीरियोडिक सिग्नल का अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो, इट विल हैव बी लाइक। सो इट्स ऑब्वियस कि एक तो जब हम फोरियर सीरीज फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास फोरियर कोफिशिएंट भी आ जाएंगे, तो ये हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए के, हमारे पास डिफरेंट इम्पल्सेस आ जाएंगे, और किस जगह पे होंगे वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेंगे। So this is what we call as train of impulses। तो अगर इसको मैं ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देना चाहूँ, इसको अगर आप ग्राफिकली देखेंगे तो किस तरह का होगा? अगर हम फोरियर सीरीज को भी देख लेते हैं कि पहले अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करूँ, लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक गिवन पीरियोडिक सिग्नल है, उसके फोरियर कोफिशिएंट्स आपके पास, ठीक है, ए के। सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, मैं एक जनरलाइज एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक सिग्नल है जिसके फोरियर कोफिशिएंट्स आपको गिवन है एंड दे आर लाइक दिस। लेट्स से कि आपके पास 0 पे है, ये आपके पास ए 0 हो गया। लेट्स से आपके पास ए 1 है और ए -1, आपके पास ए 2 है, और इस तरीके से ए -2, और इस तरीके से आपके पास लेट्स से ए 3 है, और ये आपके पास ए माइनस। ये आपके पास एक गिवन पीरियोडिक सिग्नल के फोरियर कोफिशिएंट। इसका जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म आप प्लॉट करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म आप विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा हम प्लॉट करेंगे, और हम कहेंगे कि ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? वी विल हैव इस ए नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक इम्पल्स होगी। अब यहाँ पे मैं इसको एरो से रिप्रेजेंट करूँ, और इसके साथ मैं लिखूंगा 2 पाई ए नॉट, 2 पाई ए नॉट, और ये आपके पास 0। फिर आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? देयर विल बी अनदर इम्पल्स, इसके साथ मैं लिखूंगा 2 पाई A1, और ये होगा किस फ्रीक्वेंसी पे? ओमेगा नॉट पे। फिर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप इम्पल्स फंक्शन बनाएंगे और लिखेंगे 2 पाई A2, और इस तरीके से आप इसके साथ लिखेंगे 2 पाई A3 एट ये 2 ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा 3 ओमेगा नॉट। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊंगा 2 पाई A सब -1 at a frequency equal to minus omega naught, 2 pi A sub -2, this will be at frequency of -2 omega naught, and finally we will have 2 pi A sub -3 at a frequency of -3 omega naught. So this is just to give you the meaning कि इसका मतलब क्या है। So I have proved कि periodic signal का भी आप फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, और यूनिकनेस क्या होगी कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल में आपके पास हमेशा इम्पल्सेस होंगे। दैट इज समथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड।
Let's now move on to properties. Properties of continuous time Fourier transform. So not only you need to have a knowledge of the properties of continuous time Fourier transform, you should be able to prove those properties as well. तो जब मैं फोरियर सीरीज मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे भी मैंने जब प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर सीरीज को जब डिस्कस किया था, तो मैंने आपको कहा था कि ना सिर्फ आपको इसका प्रॉपर्टी का नॉलेज होना चाहिए कि फोरियर सीरीज की ये वाली प्रॉपर्टी है, एज वेल एज आपको उसको प्रूव करना चाहिए। और फिर मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को आपके सामने प्रूव भी किया था। तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एज वेल नाउ। कुछ प्रॉपर्टीज को मैं प्रूव कर लूंगा, कुछ को मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, आपने खुद उस पर प्रैक्टिस करनी है वंस यू गेट एन आइडिया कि प्रॉपर्टीज को प्रूव कैसे करें। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहले हम नोटेशन डेवलप कर लेते हैं कि जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं, सो नॉर्मली हम शो करते हैं इसको कि फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, हम एक वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वी से के एक टाइम डोमेन सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और डबल एरो से फिर हम इसके आगे एफ लिख के और यहाँ पे शो करते हैं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम अप्लाई करें तो ये आ जाए। और डबल एरो का मतलब है कि अगर हमें ये गिवन हो, हम इसे एक्स ऑफ टी फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, और अगर हमें ये गिवन हो फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके हम इसको एक्स ऑफ जी ओमेगा कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। सो हमने जो एक एग्जांपल भी की थी उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमने एक एग्जांपल की थी कि अगर एक्स ऑफ टी इक्वल हो ई पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी के, तो हमने फाइंड किया था इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो है 1 डिवाइडेड बाय ए प्लस जी। इस एग्जांपल को अगर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? आई विल से ई पावर माइनस ए टी u of t is the Fourier transform pair of 1 divided by a plus. This is how we make use of this Fourier transform pair representation. So we can okay, so sorry, there was some disconnection at my end. So let's make use of this representation and talk about some of the useful properties that Fourier transform has. Can you people hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, sorry, ये disconnect थोड़ा सा हो गया था. The properties of CTFT. The first property that I'm going to talk about is linearity. Linearity. Fourier transform is a tool that obeys the property of linearity. और mathematically इस property का क्या मतलब होगा? It means कि अगर हमारे पास एक सिग्नल हो x1t और इसका corresponding Fourier transform pair हो x1j, and there is another signal x2t with its corresponding Fourier transform pair x of t j. Then if we have a signal x of t, which is, let's say, alpha times x1t plus beta times x2. So according to linearity property of Fourier transform, इस सिग्नल का जो Fourier transform होगा जिसको हम x
omega can be. That will be simply equal to alpha times Fourier transform of x1 plus beta times x2 j. And we can simply say that if any signal is a linear combination of number of signals, इस वक्त हम सिर्फ दो signals की बात कर रहे हैं just to demonstrate this property, but आपके पास एक signal है and it is made up of x1, x2, x3, x4, x5. So if any given signal is a linear combination of number of signals, its Fourier transform will be the corresponding linear combination of the Fourier transform of the individual signal that given signal is made up of. Now, if you want to prove this property, अगर ये property हमने prove करनी हो तो कैसे करें? How we can prove this thing कि अगर signal इस तरह का है, इसका Fourier transform. So we can make use of the two equations जो हमारे पास Fourier transform की दो equations हैं, उनको हम prove करेंगे, उनको use करेंगे कि हम कहेंगे कि इस signal को हम देखते हैं कि Fourier transform x of j omega अगर हमने find करना हो तो this is what we will do. But हमारा signal x of t है, it is actually equal to this. So let me replace this. Just 1 minute. Okay, so let's continue with our discussion. So in place of x of t, our signal is now x alpha times x1t plus beta times x2 raised to power minus j omega t dft. And then this is having two parts, so we can do it in this way. So alpha is constant, so it can be taken outside of the integral. So we are left with this thing, x1t e power minus j omega t d. Similarly, beta is kind of some constant number. It can be taken outside of the integral. So we are left inside x2t e power minus j omega t. Now, this integration and this integration, they correspond to Fourier transform of x1, and this correspond to Fourier transform of x2. So x of j omega is equal to alpha times x1 j omega plus beta times x2 j. And this is what we wanted to prove, that if signal is like this, its Fourier transform. This is what linearity property is. Okay, let's move on to next property. And this property is related to time shifting property. So what is the effect of time shift on the Fourier transform? So if x of t has a Fourier transform pair, x of j, and now if we introduce time shift, so x of t becomes x of t minus t. So what is going to happen to the Fourier transform? So I will write this property directly, and then we can easily see how we can prove it. So
According to the time shifting property, the Fourier transform of this time shifted signal becomes the original Fourier transform. It is going to be multiplied with e power minus j omega t. So any effect in terms of time shift, what we need to do is we need to multiply the Fourier transform by this factor. But let's find out कि इसको हम prove कैसे कर सकते हैं. Prove of this property. So I can prove this in this manner कि मैं कहूँगा कि x of t minus t naught का जो Fourier transform pair है, let's call it x dash. Let's call it x dash because it will be something different than x. उसको मैंने x dash. And then we need to find out what is x dash. So making use of the relationship कि हमारे पास x of x dash omega हम कैसे find करेंगे? We have to find out e power minus j omega t. तो हमारे पास जो original equation, this one, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जब आप x when you say that x of t is a Fourier transform pair of x of j omega, तो x of j omega का relationship xt के साथ इस relationship के थ्रू हम करते हैं. So this is the signal for which we are finding the Fourier transform और ये इसका Fourier transform. ठीक है, इस केस में हमारे पास जो सिग्नल है वो ये है और इसका Fourier transform ये है. ठीक है, ये हमने फाइंड. So what we can do is, let's say t minus t naught is equal to tau, which means that dt is equal to d of tau, और इस equation के बेस के ऊपर we can say that t is equal to t naught plus tau. So what we are doing is we are changing the variable small t को मैं replace कर रहा हूँ with tau, variable change. So limits भी हमारे पास change हो जाएंगी. These limits are minus infinity to plus infinity with respect to t. But even इस relationship के base के ऊपर अगर हम देखें कि जब capital small t minus infinity होगा तो tau भी minus infinity होगा. जब t plus infinity होगा तो ये भी plus infinity. So based on that मैं इसको लिखूंगा x dash j omega is minus infinity to plus infinity. This is going to become x of tau, and then e power minus j. इस t की जगह हम लिख लेंगे t naught plus tau, and then dt की जगह हम लिख देंगे d of tau. Now because the variable is tau, तो यहाँ पे जो आपको e power minus j omega t naught है, इसको हम इंटीग्रल से बाहर लिख लेते हैं. E power minus j omega t naught is constant, and what is left is integration from minus infinity to plus infinity of x of tau e power minus j omega tau d of tau. Now what is this? ये जो आपको नजर आ रहा है, it is basically the Fourier transform of x, which is represented at x of j omega. So what we have proved is कि हमारे पास result क्या आ गया कि x dash j omega is equal to e power minus j omega t naught x of j omega. And this is what
we already mentioned कि अगर टाइम शिफ्ट इंट्रोड्यूस होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ये बन जाएगा और ये हमने इसका प्रूफ कर लिया. This is something which you must be able to do for any property that I am talking about. So let's move on to third property. It's called conjugate property. So according to this property, if x of t has a Fourier transform pair represented by capital X, function of omega, if you take the conjugate of time domain signal, so x of t becomes x conjugate t. According to this property, and I will prove this property in a short while, the Fourier transform will become x conjugate of minus j omega. Now let's find out how we get to this result. So what is the relationship of this original signal with its corresponding pair? So you say x of j omega is integration of x of t from minus infinity to plus infinity and multiplied by this function. Let's apply conjugation on both sides. तो लेफ्ट साइड पे मैं कंजुगेशन ऑपरेटर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x कंजुगेट हो जाएगा और राइट साइड पे हमारे पास हो जाएगा x कंजुगेट ऑफ t हो जाएगा. एक्सपोनेंशियल e पावर माइनस j ओमेगा t का कंजुगेट लेंगे तो ये हो जाएगा e प्लस j ओमेगा t. We get this. Now in the standard expression of Fourier transform, we need minus in the exponential factor, but हमारे पास plus. What we are going to do is replace omega by minus omega on both sides so that our result doesn't change. इसका मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x कंजुगेट माइनस j ओमेगा minus infinity to plus infinity x conjugate of 3 and this will become e power minus j omega t. Now if you look at the structure, just like this was the Fourier transform of this signal, so we can say this must be the Fourier transform of this signal, and this is what we have done. X conjugate t का Fourier transform क्या होगा? X conjugate minus j. This is direct proof of this property. Now as a special case of this property, अगर हम ये कंडीशन करें कि जिस सिग्नल की हम बात कर रहे हैं ये रियल वैल्यूड सिग्नल है, सो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि जिस सिग्नल की हम बात कर रहे हैं वो रियल सिग्नल. अगर ये रियल सिग्नल है इसका मतलब है कि x कंजुगेट t और x of t बराबर हों. if you take the conjugate of a real number you will get the same number. तो अगर x of t x कंजुगेट t के बराबर हैं और x of t का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है x of j ओमेगा और x कंजुगेट t का फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है x कंजुगेट माइनस j ओमेगा, तो अगर ये दो सिग्नल बराबर हैं तो इनके फोरियर ट्रांसफॉर्म भी बराबर होंगे. तो वी विल से x कंजुगेट माइनस must be equal to x of j ओमेगा. और इसको फिर हम दोनों साइड का दोबारा अगर आप कंजुगेट ले लें तो यू विल से x of
minus j omega must be equal to x conjugate j omega. तो ये प्रॉपर्टी कब फुलफिल होगी? जब आपका सिग्नल क्या हो, रियल। और फॉर रियल सिग्नल अगर उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है तो हम कहते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? ये कंजुगेट सिमेट्रिक। Whenever Fourier transform has this property that x conjugate j omega is equal to x of minus j omega, we say कि Fourier transform क्या है? It is conjugate symmetric. Let's continue with our discussion about the properties of the Fourier transform in the last session. Okay, I will continue my session in 5 minutes. Okay, the last session of today's lecture.